That's our top focus this hour. Amid the turmoil in Afghanistan, India is all set to chair the Brics summit today. Prime Minister Narendra Modi will chair the meet virtually, while the nations will discuss terrorism, sustainable development goals. The crisis in Afghanistan will remain on top of the agenda. This as Afghanistan situation is impacting 3 of the 5 nations directly, of which China and Russia have been supportive of Taliban so far. Well, what are the key pointers to look at as India is set to chair the Brics summit today? What is it that we will insist upon and highlight upon? Prime Minister Modi, as we told you, to attend the Brics summit virtually. He will be a part of it, taking part into the discussions. Brazil, Russia, China, South Africa, these are the member nations of Brics. Theme is about cooperation for continuity, consolidation and consensus, sustainable development goals of the region. Pandemic, terror in Afghanistan is on the agenda. It would be interesting to see what countries like China and Russia have to say. Chinese, of course, hosted the Taliban delegation very recently, soon after they had taken over various parts of Afghanistan. Going forward, what kind of message India reiterates? What is it that we can highlight to the Brics nation? And is there any kind of cooperation we can expect, at least from a country like Russia, which has taken a measured, calibrated and a cautious approach? Most countries, including Russia, are worried about the fact that terrorism may spill into their country and Afghanistan will become a safe haven for terrorists. Going forward in this Brics summit, if there are any kind of issues that India can press upon, if there are any kind of ties that can be built, India so far has taken a subjective approach, situation by situation. Humanitarian aid, making sure that Indians should be rescued from Afghanistan who are still stuck there. All of that has been agenda of the country. Russia has said in a statement that we must watch the actions of Taliban rather than what they are saying. How much of that is really possible? Let's see. All right, let's take you through some another important pointers. This is a hectic September for Prime Minister Modi. There are multiple international engagements which are lined up. Taking you through them one by one. SCO summit talks to be held virtually once again, chaired by Tajikistan. Tajikistan is one of the countries in Central Asia that we can probably look as a partner to. Prime Minister to virtually attend this summit, as we just told you. SCO summit will be another important regional bloc in making sure that we have cooperation. Top focus will likely be on Afghanistan. Once again, most of the regional summits in the next few days are going to be focusing on Afghanistan situation. Prime Minister likely to visit US as well. This is another very important visit we are looking forward to. First, bilateral with Joe Biden, and what kind of support we can expect from the US. While the US looks keenly towards India for ground intelligence, talks on Afghanistan, regional stability and also the role of the Chinese in this entire region. Quad summit, in-person meet likely to be held in Washington. Meet uncertain amid reports of Japan Prime Minister stepping down. So we'll have to wait and watch. The confirmation on Quad is yet to come. The United Nations General Assembly, Prime Minister to address United Nations General Assembly on the 25th of September. Meet in hybrid mode due to the pandemic. So clearly even here it's likely to be a virtual address by the Prime Minister. At the UNGA, Joe Biden is expected to deliver his first address at the United Nations General Assembly. My colleague शैलेंद्र वांगू is joining us on the broadcast. शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे आज की ब्रिक्स की जो समिट है, जो मुलाकात होगी वर्चुअली हो रही है, किस तरह का एजेंडा है जो इंडिया हाईलाइट करेगा? चाइना भी उपस्थित रहेगा, रशिया की भी मौजूदगी रहेगी, किस तरह का कोऑपरेशन है जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आज शाम 5:30 बजे वर्चुअल मोड में ब्रिक्स समिट होने जा रहा है, जिसमें कंट्री हेड्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें रशिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका और ब्राजील शामिल होंगे। तमाम पहलुओं पर बातचीत होगी। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और मल्टीलैटरल रिफॉर्म्स की बात इसमें हर बार होती आई है। हालांकि काउंटर टेररिज्म भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ब्रिक्स प्लेटफॉर्म का, और इस काउंटर टेररिज्म के तहत अफगानिस्तान पर भी माना जा रहा है कि चर्चा हो सकती है, और ये पहली बार होगा जब पीएम मोदी और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एक ही मंच पर होंगे। करीब पिछले साल के बाद ये इस साल ये पहली बार हो रहा है। तो जाहिर तौर पर इसमें अफगानिस्तान को लेके जो चाइना का स्टैंड रहा है, हमने हाल फिलहाल में ये भी देखा कि चाइना की तरफ से स्टेटमेंट्स आए हैं नई तालिबान गवर्नमेंट को लेकर भी, और एक असिस्टेंस भी अनाउंस की गई है चाइना की तरफ से नई तालिबान गवर्नमेंट को लेकर। तो जाहिर तौर पर इन तमाम इश्यूज पर आज की इस बैठक में कंसेंसस बनाया जाएगा। और वहीं रशिया एंड चाइना, ये दोनों ने अब्सटेन किया था जब लास्ट मंथ
जो रेजोल्यूशन पास हुआ था यूएनएससी में और इंडिया की प्रेसिडेंसी में, तो रशिया और चाइना ने एब्सटेन किया था। तो ऐसे में ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर ये पांचों कंट्रीज बातचीत करेंगी और माना जा रहा है कि अफगानिस्तान को लेकर कंसेंसस और एक स्टेटमेंट भी इस मीटिंग के बाद आ सकता है और शुरुआत इसकी प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। उनके एड्रेस से शुरुआत आज शाम 5:30 बजे होगी। जी, अगर एक बहुत रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव लें शैलेंद्र, तो चाइना और रशिया ऐसे दो देश हैं जिनको तालिबान ने खुद ही निमंत्रण दिया है कि आप हमारी जब स्वेरिंग इन होगी तो आप ज़रूर आइएगा। रशिया ने कहा है कि वी आर इन अ वेट एंड वॉच सिचुएशन। हम देख रहे हैं कि तालिबान अपने वादों को कितना पूरा करता है। चाइनीज़ तो एक तालिबानी डेलीगेशन को होस्ट भी कर चुके हैं। इस तरह के पूरे माहौल में क्या कोई भी पॉसिबिलिटी है कि एटलीस्ट रशिया के साथ हमारी कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप या टाइज हो सकती है? देखिए, जैसा आपको मालूम होगा कि रशिया के साथ कल ही एनएसजी डोवाल और रशियन सेक्रेटरी के बीच में बातचीत हुई थी अफगानिस्तान के कंसर्न से जुड़ी हुई। चाहे चाइना हो, अफगानिस्तान को लेकर, या फिर रशिया हो या इंडिया हो, प्राइम कंसर्न इज टेररिज्म कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए ना किया जाए, क्योंकि इसका स्पिल ओवर जो नेबरिंग कंट्रीज है उस पर हो सकता है। और भारत क्योंकि नेबरहुड में है, भारत पर भी इसका स्पिल ओवर तो नहीं, डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली जो एसेट्स, जो इंटरेस्ट इंडिया के हैं अफगानिस्तान में, उन पर उनको नुकसान हो सकता है। तो जाहिर तौर पर हर कोई इस टाइम अफगानिस्तान में वापस किस तरह से नॉर्मलसी आए, और वहां पर जो इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात की जा रही थी, और कल भी हमने देखा है कि मिनिस्ट्रियल मीटिंग, जिसमें हालांकि चाइना, रशिया और ईरान इसमें शामिल नहीं हुआ, लेकिन इस मिनिस्ट्रियल मीटिंग में भी सबने ये कंसर्न जताया है कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात की गई थी, और जो सरकार वहां पर बनी है अफगानिस्तान में वो इंक्लूसिव तो समझ नहीं लगती है। और ऐसे में इंतजार किया जा रहा है, वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहे हैं तमाम देश, ताकि इंतजार किया जाए और थोड़ा और वक्त दिया जा रहा है ताकि एक ऐसी गवर्नमेंट है, क्योंकि ये इंटरिम गवर्नमेंट है, अगर नई गवर्नमेंट वहां पर प्रॉपर तरीके से आती है तो क्या उसमें उनको पुराने लीडर्स को जगह मिलती है या नहीं। और वहीं जो ह्यूमन राइट्स हैं उसको लेकर भी इन तमाम कंट्रीज ने चिंता जताई है। लेकिन आज की मीटिंग में स्पेसिफिकली रशिया, चाइना और इंडिया मौजूद होंगे। हालांकि ब्राजील और साउथ अफ्रीका फार ऑफ कंट्रीज है, वहां पर इसका अफगानिस्तान का सीधा जोग्राफिकली इसका असर नहीं पड़ता है। लेकिन क्योंकि ये तीनों कंट्रीज इसमें आज बैठक में शामिल होंगे, तो माना जा रहा है कि अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन को लेकर और टेररिज्म एक प्राइम कंसर्न है, जिसको लेकर आज की बैठक में चर्चा हो सकती है। शैलेंद्र, हमारे